Uh, Secant method is another method of solving a nonlinear equation which contains a root between two given x values, x1 and x2. It is also known as linear interpolation method. Uh, these x1 and x2 are considered to be initial approximation to the root. In contrast to bisection method that we have studied before, we proceed further not by taking midpoint of the interval, but using the secant line, that is the line joining the 2 points corresponding to x1 and x2 on the graph, this red line, where it intersects the x-axis, that is considered to be a new approximation, and this new approximation x3 is obtained using this formula: x3 is equal to x1 minus y1 upon slope of the secant line, the red line. Unlike bisection method, where we always work on an interval that contains a root, here our selection of new interval is different. Starting with x1 and x2, we calculate x3, so we have got 3 approximate values for the root. Assuming that x3 is closer to the root, out of x1, x2, x3, x1 is on the left, and we generally know in this graph x3 is in the middle and x2 on the right, but it is not necessary that in every problem it is like that. But our sequence is that out of x1, x2, x3, we leave out x1 and work on x2 and x3. And from x2 and x3, we repeat this similar process and calculate x4. Then from x2, x3, and x4, we leave out x2 and work on x3 and x4 to get x5. And in this way, we proceed further. So from xn, xn plus 1, and xn plus 2. From xn and xn plus 1, we calculate xn plus 2. That means using last two x values, we always calculate a new value using the same formula. That the third value is produced from first value of x minus first value of y divided by the recent secant line. We discussed some issues related to this. Particularly important was how to stop this process if you are making a program, or even if you are using an Excel sheet or working manually. We consider the new value of x that we have obtained and the previous value of x and see the difference between them. If that difference becomes small, we have to stop, or we have to consider the function value, because when we are very close to the root, the function value should be very close to 0, and we have to stop the process on the basis of this. So either the new x value and the previous x value should be smaller than a small number. मैंने full आवाज कम कर दिया. There is a possibility of divergence also, that previous x value and the new x value are too far apart, and that can also be checked. But tolerance is a number. Tolerance. लफ्ज़ टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त, और हमारे कंप्यूटेशनल वर्क में बर्दाश्त का मतलब ये है कि हम कितनी कैलकुलेशंस करते रहें. जस्ट लुक एट द एल्गोरिथम. This here is the algorithm for secant method. So how do we start the algorithm? We select a function fx, which comes in our equation fx is equal to 0 that we have to solve.
We also set two x values in this algorithm. I have named them, instead of x1 and x2, I have named them a and b. We have to select a small number, which we call tolerance. We have to select a large number, which we have called div, divergence के लिए. So TOL is tolerance for small number and div is a large number. After selecting all these things in the first step, defining step, we compute the function value at a, the function value at b, and new value of x is calculated using this. First x value minus function value at the first x value divided by slope of the secant line, which is written as reciprocal here, so it is multiplied. And once we have obtained the new point or new value of x as c, we also find the function value at c. Once we have done all these calculations, we display first x value, second x value, function value at first x value, function value at second x value, the new value of x that we have calculated from this formula, and the function value at the new x obtained. If the new x obtained and the last x difference is less than tolerance, we go to step 6, that c is now close enough to the root. So we display that c is an approximate root. That finishes the algorithm. But if the last x value and new x value distance is not less than small number, हम adjustment करते हैं, a को छोड़ देंगे, लिहाजा b की वैल्यू a में चली जाएगी और c की वैल्यू b में चली जाएगी. That means out of a, b and c, we relabel b and c as a and b, and then we check for the divergence, the last two values of x. अगर वो large number से बड़ी हो गई हैं, then we display that divergence is occurring and we will quit the algorithm. लेकिन अगर divergence की condition नहीं आई है, तो then we repeat step 2 to step 4 again. Whenever we get the convergence from step 3, we will drop down to step 6 and the algorithm will be completed. An example that shows all this calculation is given here. The given function is 3x plus sine x minus e power x is equal to 0. And we need a root, positive root, correct to 4 decimal places. In my first lecture on the topics of numerical analysis, I discussed how to locate the root using the change of sign rule. अगर इस function में आप x equal to 0 रखेंगे और x is equal to 1 रखेंगे, so you'll find that this function will have different signs. और मैंने ये काम इस example में करके नहीं दिखाया, because I have already taught you how to obtain the interval that contains the root. I've just said that we have the root between 0 and 1, and another root is between 1 and 2. So we first go to find out the real the interval. Zero, 1, we try to find out the root. What we do, we calculate function at a, that is 0, function at b, that is 1. They are of opposite sign, that means a and b, there is in between a and b there is a root. Then we calculate the secant value and then calculate the new c or x3. Let me show you how I do it in Excel sheet. So
in Excel sheet A, B, FA, FB, M secant, slope of secant line, and using that we calculate C, then F at C. This is what I told you while describing the algorithm. ये headings डाली है मैंने, मैनुअली काम करूंगा तब भी हेडिंग डालूंगा, एक्सेल में करूंगा तब भी हेडिंग डालूंगा. और इफ आई मेक अ प्रोग्राम, तो जो एल्गोरिथम मैंने आपसे डिस्कस किया है सूडो कोड, उसमें टॉप लाइन में हमने कहा था फीचर सब चीज़ें डिफाइन करें, तो उससे पहले हेडिंग आप डिस्प्ले कर सकते हैं. तो वी वर वर्किंग ऑन 0 and 1 interval, and what was the function? Function was this. So we calculate FA, यानी इसमें x की जगह 1 डाल रहा है. So how do we fill the cell? 3 times is equal to 3 times x. Now here x has to be A, and A means value in cell F0, F4, plus sine of x, which is again an F4, minus e power x के लिए exp function इस्तेमाल होता है Excel में, F4, and we get the value of function, this function, at x is equal to A, that is 0, and we copy and paste this here, and we get the function value at B, and B is 1, and here now I have to calculate the secant, slope of secant, which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So I use this formula to fill this cell. Y2 is coming from the cell I4 minus H4, and this number is divided by x minus x2 minus x1, that is 1 minus 0. But instead of writing down 1 minus 0, I write down G4 minus F4. The slope of secant line is worked out. Then our formula for new value of x is first value of x, that is coming from F4, minus first value of y, that is coming from H4, divided by slope of secant line, which is in J4. So new C is calculated. So look back on the calculations that I showed here. We have some different, yes, C is exactly the same. So मैंने Excel sheet में जो अभी काम किया था FC डाल दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि FC डालें, because my logic is in the next step मुझे ये first x value है, second value x value और ये new x value है, तो मैंने first की जगह second डालनी है. I have to place second value in the first place, so I write down is equal to G4. Then in the second place, I have to put this third value. So I write down is equal to K4. And then I have to repeat these calculations in the cells FA, FB, M secant, and C. So I just select these cells which contain formulas and copy drag, and the next iteration is done. Now we note that every cell is filled with formulas. So we select the whole line, which represent one iteration, one set of calculation, and copy drag. And we see
that if I look in the column of C, तीन और तीन छः और तीन नौ decimal places तक result same आ गया. So this is the way the secant method works. Let me go back to the worksheet. So this is this table is copied from Excel sheet and demonstrates how the secant method works. Here, this is shown that the previous x value and new x value that we have calculated match at 6 decimal places. So the accuracy is of 6 decimal places. And as far as tolerance is concerned, the difference between these two is less than 0.6 zeros and 1. इससे less है last x value और new x value. We have discussed the algorithm already. Root obtained in the above table is approximately this, and is correct to 6 decimal places, and that means tolerance is 10 to the power minus 6. Secant method के algorithm discuss कर चुके हैं. मैंने ये कहा था कि secant method जो कि अभी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा smoothly और बहुत ही rapidly इसने रिजल्ट दिया है, मगर not always it is like that. Just look at this figure. This is a very well behaved function. हो सकता है कि मैं जो दो x values consider करूँ तो नए और secant line बनाऊँ. तो ये secant line जो है वो actual root के करीब ना हो, secant line actual root के दूर से गुजर रही हो. So previous x and new x may be too far away. Here we have some notes. जो sequence of results हम produce कर रहे हैं, they should converge to a single value. That is the requirement of convergence. In case slope of secant, which is dividing y value in every iteration, if this becomes very, very small, then this whole number will be large, and these two numbers will be at large distance, and that will an indication of not convergence but divergence. So how do we stop the iterative process? There are two possibilities that I've discussed. You have to x values per test karo tolerance, या function value per tolerance test karo. So although in example the secant method appears to be rapidly converging, but there is a huge possibility of divergence because you are dividing by some number that you have calculated during the process. When you are dividing by some number, that number may be 0, in which case the algorithm fails, because division by 0 manually करो या Excel sheet पे करो या programming में program तो abnormally terminate हो जाएगा unless and until तुमने उस पर कोई control नहीं लगाया हुआ. कि before division by 0 you check, उस number को check करो अपने program में कि ये 0 तो नहीं हो गया. और हमारे इस एल्गोरिथम में ये है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर स्लोप ऑफ सीकेंट छोटा होता चला जा रहा है तो हमें फौरन नजर आ जाएगा कि सी और ए और सी और बी, the latest two values are too far apart, so that is an indication of divergence that will be controlling by the number div. So we have a modification to make sure that the secant method does not face the divergence situation. तो इस algorithm को हम mix कर देते हैं कि once we have calculated three values A, B, C, तो out of the three कौन सा छोड़ना है? तो ना simple secant method में A, B, C यानी x1, x2, x3 में से x1 छोड़ दिया, x2, x3 पे काम किया, x2, x3 से x4 कैलकुलेट किया, x2 छोड़ दिया, x3, x4 तो हम ये सिंपल यूलर मेथड में कंडीशन लगा दें. कौन सी वाली? बाइसेक्शन मेथड वाली.
कि ए बी सी में से वो 2 पॉइंट अगली आइट्रेशन के लिए सेलेक्ट करें जिस पे फंक्शन वैल्यूज का साइन ऑपोजिट हो, यानी बाइसेक्शन वाली कंडीशन यहाँ लगा दें। बाइसेक्शन में याद रहे कि यहाँ नई एक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम मिड पॉइंट लेते थे। सेकेंड मेथड की कैलकुलेशन में हम यहाँ नई एक्स वैल्यू किसी और तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हमने किन 2 एक्स वैल्यूज पे काम करना है उसके लिए हम चेंज ऑफ साइन रूल चेक करें। सो इन दिस स्टेप 4 हमने लिख दिया कि अगर एफ सी 0 आ जाए इत्तेफाक से तो इसका मतलब सी एग्जैक्ट रूट आ गया और हमने टर्मिनेट कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो या तो ए और बी के दरमियान रूट पाया जाएगा या ए और सी के दरमियान रूट पाया जाएगा। अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करें ए और बी, डाइवर्जेंस चेक करें, अगर डाइवर्जेंस है तो क्विट कर दें, अगर डाइवर्जेंस नहीं है तो वापस जाएं स्टेप नंबर 2, 3 और 4 को रिपीट करने के लिए। अगर नई लास्ट 2 वैल्यूज जो हैं दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, दैट इज लेस देन, देयर डिफरेंस इज लेस देन टॉलरेंस, तो फिर हम रूट डिस्प्ले करके एक्यूरेसी भी डिस्प्ले कर दें, कितनी एक्यूरेसी है दैट विल बी इंडिकेटेड बाय नंबर टॉल और टर्मिनेट करते हैं। So this method is called method of false position, and the advantage of this as compared to secant method is that कि ये अब definitely converge करेगा अगर function involving involved in the equation is continuous and you have an interval which contains the root. अब एक चीज नोट करने की ये है कि जैसे ही हमने सब कुछ किया तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम है जनाब क्या, प्रॉब्लम ये है कि सेकंड मेथड से हमें बताया बहुत तेजी से रिजल्ट मिल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज ऑफ साइन रूल इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये अब स्लो हो गया मेथड। सो यू रिक्वायर मोर आइट्रेशंस टू गेट एक्यूरेसी ऑफ द सेम टाइप। हालांकि इसमें एक्यूरेसी कितनी है, सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस की है। सो bisection method we have noted down that is very slow. So जब मैं सेकेंड मेथड के साथ बाइसेक्शन मेथड का चेंज ऑफ साइन रूल मिक्स करता हूँ एल्गोरिथम में तो एल्गोरिथम स्लो हो जाता है। अदर डिसएडवांटेज इज दैट सेकेंड मेथड अब भी डाइवर्ज कर सकता है, लेकिन सॉरी डाइवर्ज बहुत स्लो हो सकता है। हम इसको फास्ट करने के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने सेकेंड मेथड में चेंज ऑफ साइन रूल का इस्तेमाल जो करना शुरू किया है उसकी मेन रीज़न ये है कि वी वांटेड टू मेक कन्वर्जेंस डेफिनेट। सो द मेथड हैज बिकम स्लोअर और 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी जो 17 इटरेशंस में आई है। This method has been very popular because of its convergence, but always अगर secant line का जो slope है किसी भी जगह 0 आ जाए या बहुत छोटा हो तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। 0 आने के केस में you can have a divergence. Let us move forward and consider another method. I hope you can see the worksheet with the heading Newton-Raphson method. Secant method में तो हमने नाम के अंदर ही secant का लफ्ज़ इस्तेमाल किया,
दैट मीन्स कि उसके अंदर सीकेंट लाइन का स्लोप इस्तेमाल हो रहा है। न्यूटन रेफसन मेथड को हम डेरिवेटिव मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि जो रोल सीकेंट लाइन के स्लोप सीकेंट मेथड में प्ले कर रहा है, हम देखेंगे कि वही रोल यहाँ न्यूटन रेफसन मेथड में डेरिवेटिव करेगा। प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला है सीकेंट मेथड का, जिसमें डिनोमिनेटर में स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, यहाँ जो फॉर्मूला डेवलप हो रहा है उसमें डिनोमिनेटर में उसकी जगह डेरिवेटिव आ जाएगा। Now, how that method is obtained, there are two methods. More mathematically inclined people use Taylor expansion. Now, this Taylor expansion of any function at x is equal to x naught. अगर आप कैल 1 कैल 2 में टेलर एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, sorry, this is the Taylor expansion formula. If a function is differentiable at x naught up to any order, this is an infinite series which has a definite shape, x minus x naught power 0 divided by 0 factorial into function value, x minus x naught raised to power 1 upon 1 into first derivative value at x naught, x minus x naught whole square upon 2 factorial second derivative value at x naught, x minus x naught raised to power 3 upon 3 factorial into third derivative at x naught, and so on and so forth. लेकिन अगर हम इसको ट्रंकेट कर दें, कहाँ तक? फर्स्ट डेरिवेटिव तक, यहाँ तक. So what we are left with is fx is equal to फॉर्मेटिंग परेशान करती है यार. So if I truncate this Taylor expansion to first order or first degree term, we are left with this. This is exactly equal this infinite series according to calculus. But when I truncate this series, इसका मतलब है अब ये exactly equal नहीं रहा, ये approximately equal है. This formula is also known as linear approximation for function values. अगर हम किसी x naught पर function value जानते हैं और उस पर function का derivative value भी हमें मालूम है, तो x naught के करीब किसी x के लिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं function value approximate करने के लिए. Now in this linear approximation हम ये assume कर लेते हैं कि अगर मैं x को x1 कह दूं तो fx1 x को x1 कह दूं तो fx1 is equal to कह देता हूँ, हालांकि it is still approximately, लेकिन अगर x naught to begin with is an approximate root of some equation fx is equal to 0, तो हम कहते हैं x1 will be a better approximation to the root. Now if fx1 is very close to 0, that means x1 is assumed to be very close to the root, तो function value वहाँ पे very close to 0 होगी. और अगर मैं इसके अंदर 0 रख दूँ और बाकी इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेल कूद करूँ, तो बाकी इक्वेशन से मेरे पास क्या बचेगा? नोट दैट अगर इस प्लेस पे 0 है, तो अब मैंने अलजेब्रिकली मैनिपुलेट किया इसको. इस टर्म को उठा के मैं इस तरफ ले जाऊं और f प्राइम से डिवाइड कर दूं और फिर x1 को सब्जेक्ट बना दूं और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, तो आई विल गेट दिस फार्मूला. And compare it with the formula of secant method. Let me write down the formula of secant method just to show the comparison.
So what's happening? First x value, first y value. Here first x value and first y value are at x naught. Here in the denominator is slope of secant line, but here in the denominator is derivative at x naught. So that's why I said that this method can be called a derivative method. The other difference between secant method and Newton's Raphson method is that कि यहाँ हम दो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और तीसरा निकालते हैं. But in Newton method, we start with one point and we calculate the next point. If I repeat the same thing, whatever I've done with x naught, if I do it with x1, the new x2 will be x1 minus fx1 upon f prime at x1. And it keeps on going. x naught पे काम करके x1 इस फॉर्मूले से हासिल किया, x1 पे काम करके इस फॉर्मूले से x2 हासिल किया, x2 पे काम करके इसी फॉर्मूले से x3 हासिल करेंगे, and so on and so forth. So our general algorithm will be based on this formula, that from every previous x value, we use previous x value, function value at the previous x value divided by derivative value at previous x value to get the new x value. And you go on doing, starting at n is equal to 0, then 1, 2, 3, 4. That is the algorithm defining formula. You should note that involvement of the derivative of the function f at successive values of x indicates that f must be continuous. ये डेरिवेटिव आप सिर्फ उस वक्त सूरत में निकाल सकते हैं फंक्शन का अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस कंटिन्यूटी के बगैर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकती. लिहाजा whatever x value you obtain in the process, at every x value the function should be differentiable, that is derivative value can be evaluated. Next, if at any of these x values the derivative function becomes 0, the method simply crashes down, because you are dividing by 0 and the method should crash down. The method diverges even if the derivative values start decreasing. If the derivative values are becoming smaller and smaller, this number is becoming larger and larger, and the new new value of x and the previous value of x difference will become larger and larger, and that is the indication of divergence. The method can be divergent if the sequence of results start alternating. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डेरिवेटिव जीरो भी नहीं हो रहा, बड़ा भी नहीं हो रहा, बल्कि ऑल्टरनेटली वेरी कर रहा है. कभी तो वो ऑल्टरनेटली वेरी करता करता एक पॉइंट की तरफ आ जाता है, बट सम टाइम इट मे नॉट रिड्यूस टू अ सिंगल पॉइंट. There is another way of developing this formula of very good. So you check this geometrical method, which is taught in calculus courses to derive the formula of Newton's method using geometrical construction. I will not describe this, you explore it yourself. The slope of tangent line, the derivative property, blah, blah, and you get the same algorithm. Let us look an application of this. Find a root of x square minus 7x minus 1 minus 3 is equal to 0. अच्छा जी, हमें ये नहीं बताया गया कि ये रूट किसके करीब है या किस इंटरवल में है. लिहाजा what we do is we consider, देखिए यहाँ x minus 1
अगर x इक्वल टू 1 हो जाए तो ये ln x डिफाइन नहीं होगा। सो एहतियातन मैंने x की वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 इस्तेमाल की हैं और फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू की। 1.1 पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, 1.2 पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, 1.3 पे फंक्शन वैल्यू नेगेटिव। So I've got a change of sign between 1.2 and 1.3. That means this equation will have a root between 1.2 and 1.3. इससे पहले लोकेटिंग द रूट के लिए मैंने आपसे कहा था 0, 1, 2, 3, 4 इस्तेमाल करें, लेकिन 0 यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, 1 यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, लिहाजा आई स्टार्टेड यूजिंग x is equal to 1.1 and onwards. अगर मैं 1.1 के बाद 2 भी इस्तेमाल करता तो प्रॉब्लम होती। क्या प्रॉब्लम होती? Let me show you in the Excel sheet. This formula we are using. Can you see the Excel sheet? No, sir. Okay. Screen share करिए। Okay, okay, कर रहा हूँ। Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. So x fx demonstrating the location of root. I said I cannot use x is equal to 0 because log of -1 is not defined. I cannot use x is equal to 1 because log 0 is not defined. So I start with 1.1 and then fill the cell with the formula. X square, x is an h16. So h16 raised to power 2 minus ln h16 minus 1 minus 3. मैंने आपसे कहा था कि 1.1 के बाद मैं 2 इस्तेमाल कर सकता था। लेट अस सी, अगर मैं 2 इस्तेमाल करूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I don't get the change of sign. 3. So I don't see the change of sign. Whereas locating the root means I have to work for x values where I have a change of sign. So instead of jumping from 1.1 to 2, I consider 1.2, I consider 1.3, and I see the change of sign. So the root can be in an interval which is not of integral size, यानी 2 और 3 के दरमियान या 3 और 4 के दरमियान जिनका साइज 1 यूनिट है, इससे कम डिस्टेंस पे भी इंटरवल हो सकता है, जो कि इस एग्जांपल में हम देखें। So going back to that calculation, so that is why मैंने location or locating the root के problem में instead of using 1, 2, 3, 4, 5 due to the involvement of log and due to the fact that के 1.1 से अगर हम directly jump मारो 2 पे तो change of sign नहीं मिलेगा। To find the change of sign, मैंने 1.1, 1.2, 1.3 and I found that there is a change of sign between 1.2 and 1.3 for the function values. Now the root should be somewhere between 1.2 and 1.3. So this Newton's method formula algorithm, this general formula, एक x पे काम करके नया x निकालता है, फिर उस नए x पे काम करके फिर नया x निकालता है। इसका मतलब है मुझे, this is not a 2-point starter. We consider bisection method, which starts with 2 points that contain the root. We used the secant method, which is a 2-point method, and it starts with an interval. But Newton's method is a single point method because derivative is being used, and here is the computation. And let me demonstrate the computation
in Excel sheet, which is very simple compared to the previous method. So I've got x, fx, f prime x, and new x. That's what I have to work out. Now, what's the derivative of this formula? The derivative of this function is written here. तो अपनी याददाश्त के लिए मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एक्सेल शीट पे. So that I start with 1.2 और 1.3 के दरमियान रूट है. तो मैंने एग्जाम्पल में कहाँ से शुरू किया था? 1.25 से. 1.2 और 1.3 के दरमियान है, तो 1.25 से शुरू कर दिया. So 1.25 is equal to x square, which is coming from F22, minus ln F22 minus 1 bracket minus 3. Function value calculate होगी. Derivative value, this is derivative. So is equal to 2 times F22 minus 1 divided by x minus 1. X coming from F22. Derivative value calculate होगी. New x कैसे निकालना है? New x निकालना है is equal to previous x and F22 minus function value, that is G22, divided by derivative value, that is H22, and the new value is calculated. This new value has to serve as the base point or the starting point. So we copy it from there, from I22, and then these formulas, these cells are all filled with formulas, copy, drag, and now every cell is filled with formulas, copy, drag, and we see that 9 decimal accuracy is obtained in only 3-4 calculations. So that is a property of Newton's method. If it converges very rapidly. So this rapidness is also because of the fact that we worked on the interval 1.2 and 1.3, and it started at 1.25, and the root is very close to 1.25. इसी तरह इसका रूट जो है एक 1.5 और 1.6 के दरमियान भी है, and you can go to find it out. एक और एग्जांपल मैंने इसके अंदर सॉल्व करके शेयर की भी आपसे, आप देख लीजिएगा. इसके बाद एक और इशू मैंने डिस्कस करना है, बट टाइम इज ओवर. So I will start my next lecture from this point onward. But before that, let me share some exercises जो मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ. प्रॉब्लम सेट 1. अब तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं, जहाँ इंटरवल दिया हुआ है, बाइसेक्शन मेथड भी इस्तेमाल करें, सीकेंट भी इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस की. इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं 0 और 1 के दरमियान, दोनों मालूम करें. एंड गो थ्रू दिस एक्सरसाइज सेट जो मैं शेयर कर दूंगा अभी रिसोर्सेज में. With that, I terminate today's discussion.
सर मेरे क्वेश्चन है हाँ जरूर। सर ये जो हम लोग आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अभी एक्सेल पे, जी जी। तो ये नंबर ऑफ आइटरेशन हाँ आवाज कट गई तुम्हारी, लिख के कर दो सवाल। Your sound is not very clear. डेसिमल प्लेसेस के ऊपर जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। I'll discuss this point in सर मैं detail. आपका सवाल समझ गया हूँ मैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में शुरू से डिस्क्राइब करूंगा, राइट? Any further query, please ask me on the WhatsApp group or Facebook group. And as and when I'll find time, I will give you an answer. Okay. With this, I terminate today's discussion. I hope you take care of yourself, your family, friends,